A warm welcome to all of you to the Special Needs Children podcast with me, Chitra Iyer. In last week's episode, we revisited some incredible individuals and organizations that are creating real impact in the field of vocational work for adults with disabilities. These are people who don't just talk about possibilities, they build pathways, nurture skills, and open doors for young adults to lead fulfilling, independent lives. If you missed it, I encourage you to go back and listen. In today's episode, we take this a step further. We honor families who have helped their special needs adult hone their skills and move towards independence. A big salute to these parents for turning hope into reality and independence into a way of life. We now meet Swasti Mehta, an inspiring young entrepreneur born with Down syndrome. Through her brand Pudina Punch, which we all love, she's breaking stereotypes. And in this episode, she and her mother Darshana share how unwavering support and belief helped turn Swasti's dreams into reality. During lockdown, स्वस्ति शाम को लॉकडाउन में पूरे समय सब घर में ही थे. तो 5-6 बजे स्वस्ति पुदीना का शरबत बना के सबको पिलाती थी घर में. और उसके भाई और मैंने कहा कि कुछ तो बेचना चाहिए, स्वस्ति बेचेगी. तो उसके भाई ने कहा कि ये बनाती है बहुत अच्छा, ये बराबर बिकेगा. तो ऐसे ये यंगस्टर के दिमाग बराबर पता करता है कि किसको क्या पसंद आएगा. तो उस समय ये पुदीना पंच बनाना शुरू हुआ. ओके. और लॉकडाउन में तो ये बॉटल्स लाना सब करवाना बहुत मुश्किल था. आपके भाई ने किया. आपके भाई का नाम क्या है? आसमिता का है. अच्छा. और लेबल्स भी लगाए. ये लेबल्स उसने बनाए. लेबल सब उन्होंने बनाया है. डिजाइन उसने किया. आपको पसंद है बहुत? हाँ, उस पर मेरी फोटो भी है. खुद मैं बना सकती हूँ. वेरी नाइस. और एक बॉटल आप कितने में बेचते हो? मैं 250 रुपीज का बेचती हूँ. 250 रुपीज पर बॉटल. मैंने पिया है और हमको बहुत पसंद है. मेरे को, मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को ये बहुत ही पसंद है. वेरी नाइस. और हमारे ऑफिस में भी सबको बहुत पसंद है आपका पुदीना पंच. तो पुदीना पंच के बारे में थोड़ा बताइए कि आज आप कितना बॉटल बना रहे हैं और इसका फ्यूचर प्लान क्या है? पुदीना पंच स्वस्ति ने बनाना शुरू किया और एक समय ऐसा आ गया था, इतने ऑर्डर्स आ रहे थे. सिर्फ ऑर्डर्स नहीं, उसके साथ स्वस्ति को कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे. इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते थे, गिफ्ट्स आ रहे थे. अच्छा. उसके कस्टमर्स उसको गिफ्ट्स भेज रहे थे और उसके कस्टमर्स पूरे अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट्स भेज रहे थे. लवली. तो स्वस्ति दिन में कभी कभी उसने 60 बॉटल्स भी भेजे हैं. अच्छा. इतना बड़ा काम. ऑर्डर भेजा. हाँ, ऑर्डर्स. तो ये कहाँ पर करते हैं आप? कोई वर्कशॉप घर है? घर पे बनाते हैं? घर से बनाते हैं. ओके. घर से बनाती है. और स्वस्ति, मतलब स्वस्ति का जो एक्सपीरियंस रहा है इसमें, ये मुझे बहुत महत्व का लगता है. स्वस्ति पुदीना खरीदने जाती है, पुदीना साफ करती है. स्वस्ति लेमन स्क्वीज भी करती है. हाँ, लेमन स्क्वीज करती है और भरती है. तो जो कुछ काम उससे हो सकता है सारे. और एक्चुअली स्वस्ति की थोड़ी ज्योग्राफी भी सुधर गई क्योंकि हर एक एड्रेस उसको समझ में आने लगा. बैंगलोर कहाँ है और चेन्नई कहाँ है. कश्मीर भी भेजा. दिल्ली में जाता है. कलकत्ता, बैंगलोर, अमृतसर, माथेरान, सब जगह ऑल ओवर इंडिया जाता है. सुपर. ओके. सो नाउ द फ्यूचर प्लान कहा तो मेरे मन में एक ये विचार आ रहा है कि स्वस्ति अकेली क्यों. मतलब मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी कॉल आया था जो वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं. कि इसको हम कुछ आगे बढ़ाए. और मैं चाहती हूँ कि हाँ, ये सिर्फ स्वस्ति के ही लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे भी इतना पता नहीं था. जब शुरू किया तो मेरे मन में एक ही बात थी कि स्वस्ति को कुछ ऑक्यूपेशन दे दो. मगर जैसे ये काम होने लगा, आगे बढ़ते गया, मेरी समझ में आया ये है कि एक आइडेंटिटी मिली है उसको. और वो आइडेंटिटी की वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है. और जब कहाँ जाती है तो उसके मन में ये तैयारी रहती है कि मुझे लोग मेरे साथ बात करेंगे और मैं बताऊंगी. I also had a wonderful conversation with Aniket Kadam, co-founder of Powered by Autistics.
Diagnosed with autism only in adulthood, Aniket has built an impressive career as an Android developer with over a decade of experience. He is celebrated not just for his contributions to technology, but also for his advocacy around equality, mental health, and neurodiversity. His story is truly remarkable. Now that I have accommodated myself over a couple of years, and I've been accommodating myself even before I knew I was autistic, I can look at that and see that almost none of it is helpful. The one good autism support service that exists is probably occupational therapy. That is undoubtedly helpful, and basically none of the rest of it is. So I was frustrated that this was my experience searching for services that would help me, and I wasn't looking for a charity. I was looking for a business that I can pay money to, and they will help me with this service which I wanted. And then I learned that there is none. And on top of that, I had not seen at that time a single service run by an actually autistic person. Imagine if you're a woman and you go for something related to women's services and you only ever see organizations run by men. You would doubt that too. You're like, okay, maybe, but certainly everything for women cannot be run by men. That doesn't make sense. You will literally not know what problems to address if you are not one of us. Yeah. Right. You wouldn't trust a women's rights organization which has entirely male executive directorship. That something's wrong there. So similarly, I was looking for organizations with autistic leadership, not just employees. I wanted a majority of the executive leadership to be autistic. And at the time, I didn't run into anything like that. So I figured, great, like I should just create that. I had been part of working in tech for so long, 12 years. As you go higher and higher in your job, you realize the need to understand the business more and more. So I had been reading quite a bit about business over the years, and I'd been applying that at my jobs. So I figured that when a service doesn't exist, great, you can make one. And that's just a good opportunity. And that's why Powered by Autistics exists. It was founded with the explicit purpose of only ever being led by autistics, and all of the work for it, our website design, our website creations, everything related to Powered by Autistics is created by autistic people. Sudhanshu was who my sister put me in touch with. My sister's friend runs an occupational therapy center, and she knew Sudhanshu. So I got put in touch with Sudhanshu. So I knew her from near the beginning of my journey. And I felt, so first of all, she is autistic. She was a chemical engineer. And when her kid got diagnosed with autism, she gave up her career and moved to a city where they could have better services for autistic kids. She would later go on to join a charity for autism where she would rise to the head of education. And I said, so I met her quite late, and I said, you know what, why don't we start our own business? Because she was in there practicing the day-to-day, the day-to-day of the autism support services. And I had just found out I was autistic. And I was like, but I was also making very good money at my engineering job. So I said, why don't I fund whatever we need to fund, and you can take care of the day-to-day services? So for a long time, that's just how it ran. Sudhanshu decided the services. She conducted the actual operations, and I just earned money at my job and funded whatever we needed. Like, one of the things I funded was her training for teaching
non-speaking autistics how to type to communicate. It's not just typing to communicate, but basically like giving them means of communicating with the world, with their people. So she had the certifications, she had the experience actually being in the field and carrying out the things. I just had the money. So I figured, so I just put the idea in my head, like, join me. Let's do whatever we want to do. Let's do what we think is right. And now we have the musical Maitreya and his mother Asha. From the time of his autism diagnosis, their story has been one of courage and resilience. With determination and positivity, they turned obstacles into milestones, nurturing Maitreya's deep love for music and encouraging him to follow his passion. By the way, you have to listen to Maitreya perform at a live event. मला हिंडण्यात आनंद वाटतो, मला म्युझिकमध्ये आनंद वाटतो आणि मला टेनिस खेळण्यात आनंद वाटतो. बेसिकली असं म्हणजे टाइम स्पेंड करणं फ्रेंड्स बरोबर असं मजा वाटते. आणि म्युझिकमध्ये परफॉर्मन्स पण करायला आवडतो. तुला काय परफॉर्मन्स बद्दल काय जास्त आवडतं? लोक टाळ्या वाजवतात ते की तू स्वतः गाणी म्हणतो आणि इतकी खुशी खुशीने? म्हणजे तिकडे परफॉर्मन्स देर इज अ डिफरंट काइंड ऑफ लर्निंग. म्हणजे खूप अननोन फेसेस असतात आणि इट्स लाईक पीपल हू नो यू ऑलवेज प्रेज यू, बट पीपल हू डोंट नो यू इफ दे प्रेज यू इट मीन्स अ लॉट. तर तसं. Very well said. I have seen you perform and you are just fabulous. And when it comes from an unknown person, it is something different. Yeah. In fact, looking at you perform is very inspiring, Maitreya, because you are so immersed in your music and it is very visible that you love to sing. So Yes. I'm so happy that you took this up, in such a very nice way. The journey is still going on. म्हणजे it hasn't ended yet. Like it's not ended. It's just going on. It's just, it's begun and you're on it. So, जर मी हे विचारलं, सपोर्ट मी तसं म्हटलं तर म्हणजे बेसिकली ऑफकोर्स when I just started learning, I didn't know about any of these classes. As in, I didn't know about Achivasan. I didn't know there's some academy known as SMA, Shankar Mahadevan Academy. Or, for example, Rahman sir's class is KM, Music Conservatory. I didn't know anything about this. So doing all that research and finding... it's a very big task, no? Finding out these classes. Because if you start your learning at the right place, then only you can develop. You need very good teachers, right? Finally, I had the privilege of speaking with Ms. Nehal Tiwari and her parents, Seema and Anupam Tiwari. Diagnosed with autism at the age of 2, Nehal found her language through art. What started as an outlet for expression has today given her financial independence and a strong identity, thanks to her talent and her parents' guidance. And she is a hotshot CXO also today. I have my own stone painting website, Insta page and Facebook account, and I attended stone painting workshop at St. Xavier's College on 10th February 2018. And after stone painting workshop, stone painting became my passion. Now I'm doing stone painting for many years. Actually, it was not something like we found it. She developed it with time. Because जब भी वो छोटी थी तो we tried all these skills with her, like painting, swimming, किस में अच्छा करती है वो करके देखेंगे. तो she was good in painting, but in college she got the opportunity and वहाँ उसने stone painting सीखा. And then हमको लगा कि she is improving in that day by day. तो उसको हम stones ला के देते गए, उसको रोका नहीं कि टाइम वेस्ट होगा, ये मत करो, पढ़ लो. उसको प्रमोट करते गए. सोशल मीडिया हेल्प्ड अस. हर चीज़ को हमने सोशल मीडिया पे डाला. एंड व्हेन जो थम्स अप आते हैं वो उसको इतना मोटिवेट करते हैं कि विद दैट एवरी डे शी इज़ इम्प्रूविंग. नाउ ऑल्सो
जब भी कुछ नया बनाती है तो हमको लगता है पहले वाले से बेहतर है। शुरू में जब नेहल डायग्नोज हुई थी तो उसके बाद में हम लोगों ने यही पता किया कि क्या क्या थेरेपीज़ हैं। तो स्टार्टेड विथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, उसके बाद स्पीच थेरेपी। ऑक्यूपेशन थेरेपी की नेहल को उतनी ज़रूरत नहीं थी, तो स्पीच थेरेपी और उसके बाद कॉमडील दीपा के साथ किया। और हमारी कोशिश स्कूल में ये रहे कि वी आस्क टीचर्स कि व्हाट वी कैन डू सो दैट व्हाट स्कूल एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ अस। नॉर्मली हम लोगों के साथ मोस्टली इट इज़ अदर वे राउंड कि वी एक्सपेक्ट टीचर्स टू डू अ लॉट, but when we know कि our children need some extra efforts, in order to facilitate that we used to ask कि what should we do, so you will have less difficulty in handling Nehal. So we kept track of Nehal's progress and we accordingly tried to do as far as her academics were concerned. हम लोगों की कोशिश ये होती थी कि आंसर्स हम ऐसे बनाएं जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स थे जिसमें पूरा याद करना पड़ता, उसको साइंस और मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि एवरीथिंग इट्स लाइक बाइनरी, इट्स ईदर 0 और 1। बट इन केस ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश एंड हिस्ट्री, सिविक्स एंड ऑल दो सब्जेक्ट्स, वो पूरा इट वाज लाइक फ्रेंच एंड जर्मन इज़ व्हाट फॉर अस। तो उस समय हम लोगों ने कोशिश ये की कि बिल्कुल ईजी आंसर्स बनाए जिससे नेहल को डिफ़िकल्टी ना हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस। एंड ऑल्सो जहाँ भी पॉसिबल होता था वी यूज टू रिपीट द सेम काइंड ऑफ सेंटेंसेस सो दैट हर कन्फ्यूजन इज़ लिटिल लेस। उसके बाद स्कूल से हम लोग टच में रहे और हम लोगों का बिल्कुल जैसे नॉर्मली एक न्यूरोटिपिकल्स होते हैं, दे ऑलवेज बिलीव इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि 10th के बाद क्या, 12th के बाद क्या और कॉलेज के बाद क्या। हम लोग ने बिल्कुल जैसा वो फास्ट एंड फ्यूरियस का डायलॉग है, क्वार्टर माइल एट अ टाइम, सो वी टुक जर्नी एज 1 year एट अ टाइम, कि अगर नेहल 3rd में है तो लेट हर फर्स्ट कम टू 4th एंड देन वी विल सी व्हाट इज़ टू बी डन। तो एक एक साल करके, एंड वी वर ऑल्सो एबल टू मेजर प्रोग्रेस। दूसरा एक डिफ़िकल्टी ये होती है कि कोई भी प्रोग्रेस इज़ वेरी नॉन लीनियर, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट। तो जैसा शेयर मार्केट होता है कि इट नेवर गोज़ इन अ लीनियर वे, इट ऑलवेज देयर आर अप्स एंड डाउन्स। तो वैसे ही होता है, अगर उसको थोड़ा इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में बोलें तो जैसे साइन वेव होती है, इट ऑलवेज गोज़ हाई देन इट गोज़ लो, बट द फाइनल आउटकम इज़ ऑलवेज बेटर। तो यू नीड टू हैव फेथ, यू नीड टू हैव कन्विक्शन, यू नीड टू हैव पेशेंस एंड यू नीड टू हैव परसिवरेंस, कि आप धीरे धीरे करते जाओगे तो डेफिनेटली द रिजल्ट्स वुड बी गुड। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यंग पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, कि we normally lot of time it happens कि we understand कि our children are not getting it, but उनको सब समझ में आता है, they understand each and everything। तो try to be positive, try to be motivating। अगर आपको लग रहा बच्चा नहीं समझ पा रहा, हो सकता है कि आज से 2 साल बाद आपको वो बोले कि आपने ऐसा बोला था, आपने ऐसा किया था। Meet Darshana and her son Varun Sawant. Their journey through Varun's autism diagnosis is filled with small victories and big milestones. Today, Varun is not only an international marathoner who has represented India, but also a passionate baker and founder of his business Bake and Flake. I love his cookies. Hear how they turn challenges into stepping stones for his dreams. वरुणला बऱ्याचदा मी बघितलंय की आय वॉन्ट टू डू इट मायसेल्फ, हे त्याला खूप आवडतं. म्हणजे काही वर्षांपूर्वी मला आठवतं त्याला विचारलेलं की तू कॉलेजला जातो, तुला कॉलेजला काय आवडतं, तर तो पहिलं म्हणालेला रिक्षानी जातो ते आवडतं. सो कुठेतरी मला असं वाटतं की वरुण सारखी मुलं किंवा रादर वरुण हे मनमोकळ्यापणाने कदाचित सांगू नाही शकले, पण त्यांच्या कृतीतनं किंवा त्यांच्या वागणुकीतनं दिसून येतं की त्यांना कशात आनंद आहे. तर जेव्हा वरुण ह्या जगात छान मेट्रोनी जातो, रिक्षानी फिरतो, कॉलेजला जातो, लोकांमध्ये वावरतो, धावतो, जेव्हा लोक त्याच्या कुकीजची स्तुती करतात, जेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावरचे जे एक हास्य असतं ना आणि अभिमान त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत असतो, तर मला वाटतं ते बघून मला खूप जास्त आनंद होतो, खूप जास्त. आणि जेव्हा लोक मला येऊन विचारतात की तुम्ही वरुणची आई आहात का, ह्या एका वाक्यात तर मला असं मी जग जिंकलंय असं मला वाटतं.
सो मी म्हणेन की ह्या एका शब्दात की वरुणची आई, ह्याच्यात मला खूप आनंद पण आहे आणि अभिमान पण आहे. स्वप्न वरून भरपूर बघतो आणि तो जेव्हा स्वप्न बघतो तो आम्हाला अशी गुगली टाकतो की हे करायचं. म्हणजे मला असं वाटतं कुठेतरी त्याच्या मनात तो ते अर्धा रस्ता त्यांनी पार केलेला असतो की मला हे करायचंय. म्हणजे आता सध्या सांगायचं झालं तर ह्या सप्टेंबरला वरुण खारदुंगला मॅरेथॉन धावणार आहे, विच इज अन हाय अल्टिट्यूड 70 किलोमीटर रन. 72 किलोमीटर रन. आणि जेव्हा त्यांनी मला पहिल्यांदा सांगितलं, मी म्हटलं अरे आपण लद्दाखला धावून आलो ना, पुरे झालं. तर नाही, अरे खारदुंगला करायचं. आणि मग खारदुंगला करायचं म्हटल्यावर मग म्हटलं ओके. मग त्याच्यानंतर पुढचं वाक्य होतं की वर्ल्ड मेजर 6 करायचं. आणि मी म्हटलं अरे तुला हे सुचतं कुठून? तर हा म्हणजे असं धावण्याचं आणि पण म्हणजे त्याला कुठेतरी हेच मी म्हटलं ना की त्याच्यात त्याला जो आनंद मिळतो, कारण मला वाटतं कुठेतरी रनिंगनी त्याला एक ओळख दिली आहे. लोक त्याच्याबद्दल बोलतात किंवा त्याच्या अवतीभोवती त्याची स्तुती करतात आणि कोणाला नाही आवडत ना लोकांनी आपल्याबद्दल 4 चांगली गोष्टी बोलावी. आय थिंक त्याच्यामुळे जे लोकांकडनं त्याला जे प्रोत्साहन मिळतं त्याच्यामुळे त्याला हे स्वप्न बघायला मला वाटतं अजून बळ येतं. Next, we have the inspiring mother-son duo, Swati Vispute and her son Rishikesh. They share the story behind his paintings, which are amazing, by the way, the hurdles they overcame, and how they nurtured his artistic journey. त्याच्या लिजर ॲक्टिव्हिटी म्हणून आम्ही त्याला ड्रॉइंग देण्याचं ठरवलं. आणि त्याच्यामध्ये एकदा त्याने घरी पटकन असे 4-5 चित्र काढले खडून. सूर्य काढला, फुलपाखरू आणि असे छोटे छोटे खूप सिंपल. पण ती चित्र इतकी बोलकी होती की त्यावरूनच आम्हाला कळलं की याचं पुढे जे काही करिअर होऊ शकेल किंवा काही तो करू शकेल तर तो चित्रकलेमध्ये करू शकेल. पण चित्रकलेला ना सोशलायझेशनची गरज आहे ना कम्युनिकेशनची. तर दोन्ही याच्यामध्ये ऋषिकेश लॅकिंग होता. तर त्याला ही करिअर म्हणून आम्ही शाळेने आणि आम्ही मिळून ठरवलं आणि हळूहळू त्याला ड्रॉइंग क्लास त्याच्यासाठी घेतले. त्याचे एलिमेंटरी इंटरमिजिएटला त्याला बसवलं. शाळेने त्याला कॉम्पिटिशनमध्ये पाठवायला सुरुवात केली. असं करून करून म्हणजे अकॅडमिक्स आम्ही करत होतो ते पासिंग पुरतं होतं, जस्ट सस्टेन होण्यासाठी. आणि त्याच्यानंतर पुढे त्याच्या ड्रॉइंग स्किल्सवरच पूर्ण फोकस केला. हे करत असताना 7वी पर्यंत आणणं आम्हाला त्याला खूप अकॅडमिक्समध्ये त्याला ग्रास्पिंगला प्रॉब्लेम असल्यामुळे आणि कन्सेशन्स नव्हते, त्यामुळे ते खूप प्रॉब्लेमॅटिक होते. पण फोरम फॉर ऑटिझमच्या अथक परिश्रमानंतर त्याला 7वी असताना त्यांना 10वी पर्यंतचे कन्सेशन्स मिळाले आणि पुढे तर ते युनिव्हर्सिटी लेवलपर्यंत ते वाढवले गेले. आणि ह्याच्यामुळे ऋषीला खूप उपयोग झाला. त्याला आवडते सब्जेक्ट जे होते, ड्रॉइंग होता, मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट, ते त्याला घेता आलं आणि आमचं आयुष्य जरा सुसह झालं की त्याला 10वी कष्ट तर आम्ही केलेच, पण त्याच्यानंतर त्याला त्याच्यामध्ये 80% मिळवले. आणि मग पेपरमध्ये सक्सेस स्टोरीज असू दे किंवा सत्कार जागोजागी झाले आणि हे सगळं सत्कार झाले आणि खूप चांगल्या रीतीने सगळ्यांचा रिस्पॉन्स मिळत होता. आम्ही पॅरेंट्स अगदी आमचा आनंद गगनात मावत नव्हता. आणि आता माझा लेकरू फिजिक्स पक्षासाठी त्याने भरारी घेतली आहे आणि त्याला त्याच्यानंतर कलावत आर्ट कॉन्टेस्टमध्ये गोल्ड मेडल मिळालं, तेही ओपन कॅटेगरीमध्ये. आणि ओपन कॅटेगरीमध्ये गोल्ड मेडल मिळालं हे म्हणजे किती कौतुकास्पद आहे आपण सगळे समजू शकतो की त्यांनी त्या सगळ्या मुलांना कॉम्पीट करून त्यांनी ते मिळवलं. आणि हे सगळं जेव्हा मला हे होतं की मला APJ अब्दुल कलाम सरांचे कोट नेहमी स्फूर्ती देते त्याने की स्वप्न झोपताना बघू नये, जागेपणी बघावे. आणि जागेपणे बघितलेलं स्वप्न की ऋषिकेश खूप मोठा आर्टिस्ट होईल हे आज पूर्ण होताना दिसतंय. Up next is Aditi Soumya Narayan, a neurodivergent fiction writer who uses the text-to-speech app Awaaz to communicate. Aditi loves crafting slice of life stories that celebrate the human spirit. Her unique perspective has enriched her work, and I encourage you to read her book, Thus She Rose. I have always been an avid reader. My reading has shaped my perceptions and has given me this strong belief in the power of the written word to reach out, connect, and make an impact in a way that nothing else can. Plus,
As a writer, what you need is the courage to put your thoughts out there, and that fits well into my limited social skill scheme of things. So writing was an obvious career choice, especially because I love doing it. I think my autism has given me very good observation skills, which is such a prerequisite for being a good writer. Let us just say that the default mode is to presume incompetence. Having said that, I have been lucky in many ways. My family is super supportive and is my rock. I was introduced to academic learning on the iPad when I was 7 since I struggled with writing. So I have, maybe as compared to most non-speakers in India, had access to ways to express my learning, and that surely helped. Parents, these are just glimpses of my heartfelt conversations with families of individuals with special needs. Their journeys are not easy. They are marked by struggles and setbacks, but they are also filled with moments of joy, pride, and triumph. Every milestone reached and every penny earned becomes a symbol of hope for a brighter future and a sense of peace for families. Please do share this podcast. You never know which family might find encouragement and inspiration through these stories. For more information, you can write into us at teammfa@myfinad.in. And don't forget to subscribe to this podcast on Spotify, Apple, and YouTube.